व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या होती है समझते हैं सिंपल वर्डिंग में। रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, किसी भी कंपनी के डेटे को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना और समराइज करना। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग: अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग इकोनॉमिक डेटा। अकाउंटिंग को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और किसी डेटे को एनालाइज करते हैं। एक कंपनी आपने खड़ी की है, वो कंपनी आपकी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में, आप इसको एक ही वे से जांच पड़ताल कर सकते हैं और वो जांच पड़ताल का नाम है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक वे to find your loss and profit. Assets is equal to liability plus equity is a main equation of accounting. Do you know about assets, liability, and equity? What are the assets, what which have liability, and what is equity? You know about it? If you don't know about it, so don't worry. The primary role of accounting is to maintain a systematic, accurate, and complete record of all financial transactions of a business, and these records are the backbone of accounting system. We have different titles: assets, expenses, liability, and equity in our business, and these all are making our company